Hello, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's video on Vocabulary Challenge Day 4. Today we are going to discuss alphabet D and 6 better sounding words or synonyms to simpler words with the same alphabet. In case आपने हमारे A से C वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं. Alright then, let's begin. The first word on the list today is dauntless. Dauntless means fearless. किसी निडर इंसान की बात करते हैं या कहीं पे भी आप निडर शब्द का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप dauntless लगा सकते हैं. For example, she is dauntless and fit for a job in the army. वो बहुत ही निडर हैं इसलिए वो आर्मी के जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. The next word on the list today is dearth. Dearth means shortage. किसी भी चीज़ की कमी को रेफ़र करने के लिए हम वर्ड लगाते हैं dearth. आप चाहें तो शॉर्टेज भी लगा सकते हैं बट डेफिनेटली dearth is a better sounding word than shortage. Alright, let's take an example. There is dearth of food in many countries. बहुत से देशों में खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी है. The next word on the list today is destitute, which means without food, clothing or shelter. इतनी गरीबी के खाना, कपड़ा और रहना भी नहीं किसी को हासिल हो तो हम उसे बोलते हैं destitute. For example, she is always willing to help the destitute. वो हमेशा तैयार रहती हैं बहुत ही गरीब लोगों की मदद करने के लिए. The next word on the list today is dire, which means very serious or extreme. कोई बहुत ही सीरियस चीज़ या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ को हम डायर से रेफ़र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस डिसीजन विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल इन्वॉल्व्ड. मतलब जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसके बहुत ही बुरे नतीजे किसी इंसान के लिए हो सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड ऑन द लिस्ट इज़ डिस्ट्रॉट, विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड एंड अपसेट. बहुत ही दुखी, उसके लिए हम डिस्ट्रॉट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन डिस्ट्रॉट एवर सिंस her dog died. जब से उनका डॉग मर गया है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं. The last word on the list today is detrimental, which means harmful. कोई भी चीज़ नुकसानदेह हो तो हम उसे detrimental से बोल सकते हैं. For example, too much makeup is detrimental for the skin. हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना नुकसानदेह हो सकता है. Alright, with that we have come to the end of today's video. I hope you enjoyed listening and learning these simpler sounding words, but definitely words which will help you stand out in your speaking. If you have any questions pertaining to this video, feel free to write in the comment box. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram for more information on English. Also, tomorrow we will be back with the alphabet E, so don't forget to tune in. Alright then, till next time, it's bye-bye from Speak Like Kamini.